Greetings students, we are here with chapter People as Resources. It's second chapter of economics. Students, in this chapter we will discuss about the human capital. Human capital, gross national product, human capital formation, advantages of more educated and healthier population. These all things we will discuss here. The first point is mentioned here, that is economic activities by men and women. Students, look at there. Economic activities are development and wealth producing activities. It creates economic financial gain by producing goods and services and adds value to the national incomes. So directly we can say through which activity we can gain the money. These such type of activities are the economic activities. Suppose our parents are there, हमारी मदर अगर घर पे काम कर रही है, खाना बनाती है हमारे लिए, और इस तरीके के जो टास्क हैं, these are not the paid task, these are not the economic activities, but these are the activities. But our parents is earning from the outside, that is economic activities. बट जो मदर्स या जो डोमेस्टिक टास्क है उसके लिए हम उन्हें सैलरी नहीं देते, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. सेक्टर अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देयर आर मेनली थ्री सेक्टर: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेक्टर. Primary sector, it is known as agricultural sector also. This sector consider directly using of natural resources. This sector includes the agriculture, forestry, husbandry, fishing, poultry farming, mining. Such type of activities are in the primary sector. क्योंकि all things we gain direct from the nature, that's why it's known as the natural सेक्टर ऑल्सो. तो स्टूडेंट्स, यहाँ प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं और नेचुरल सेक्टर भी इसको हम बोलते हैं. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट इज द सेकेंडरी सेक्टर. इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इट मीन्स जो इसका दूसरा नेम है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. दिस सेक्टर कंसिडर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. Students, suppose we have the sugar cane, that is the example of a primary sector. But whenever the process from sugar cane to sugar cane से sugar बनाने का जो process है, that is the part of the secondary sector और manufacturing sector का वो एक example आपका रहेगा. Next is the tertiary sector. Tertiary sector. This sector is known as a service sector also. This sector provides services. तो ये हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है. It includes trade, transport, communication, banking, education, health, tourism और insurance. Such type of activities are the part of tertiary sector. Students, next is there two parts of economic activities. जो economic activities हैं उसके भी two parts हैं. First one is there, that is market activity. Examples are there. Market activity consider the production of goods और services. Goods और services को ये consider करता है. Government services for the remuneration. Next is the non-market activities. Non-market activities consider of goods and services for self consumption. यानी जो गुड्स आप लेके आते हैं या जो सर्विस आप प्रोवाइड करवा रहे हो वो सेल्फ कंजप्शन के लिए हैं, अपने आप के लिए हैं. यानी मार्केट के अंदर जिन चीज़ों को हम सेल करने के लिए, बेचने के लिए लेके आते हैं, दैट इज द मार्केट फॉर
मार्केट एक्टिविटीज और जो हमारे खुद के यूज के लिए होती हैं, दैट आर द नॉन मार्केट एक्टिविटीज। Students, it was all over what for today's. You have to take the revision up to the two parts of the economic activities, market activities and non-market activities. Thank you. Have a nice day.